He plays the corrupt police officer in a Badnaam web series, infamous for the right reasons because it has hit the right chord with the audience and they simply can't have enough of this delicious crime drama. Yes, I'm talking about Ek Badnaam Ashram, a star-packed web series directed by National Award winner Prakash Jha and starring Bobby Deol in the lead role of Baba Nirala, the con god man everyone wants in their living room or bedroom, of course on their MX Player streaming devices. It is my absolute pleasure to welcome face to face the very talented new bad man in town, Prashantt Guptha. Japnam. Japnam. So talk about the making of Ashram, the sets, the stories, setting, rehearsals, workshops, actors, interactions. Walk us through behind the scenes of making of Ashram. Traditionally what happens in Mumbai or in LA, New York, is casting directors are the ones who reach out to you for a certain role or a certain part. And I was reached out by a very famous casting director in Mumbai for this role. And it just struck me once again that why has a police officer's role come my way? But when I realized that this is Ashram, which has been seen by over 1 billion people in the country, I knew it's an opportunity that I can't pass. So I gave the audition and fortunately it worked out well, and I have no idea why the grey shaded or the bad stuff comes bad stuff in the sense of character, because I'm not really like that in reality. I'm a pretty good guy. And Prakash Jha liked it. I was very fortunate he liked it. And in a few weeks, I was cast. He called me into his office. And he took an introduction of me to understand where I come from, how I know the show, what I feel about it. And truthfully, I hadn't seen the show at that time. I saw the show after I got cast in it. But I had one workshop. Honestly, I was lucky. The acting coach on the show, she loved my sort of take on the character. And that's basically what I do. When I become a part of something, I prepare myself so well that I just have fun with it. I surrender myself to it. I imagine myself on the set, on the location, and I just go with it. And when you're comfortable with the language and when you test your voice enough with the dialogues, then it comes through organically. And the most important thing is preparation. Just be prepared. Don't leave anything for the last minute. Don't be complacent about your work. And I guess that was the process for me during the show, throughout the show. Of course, working with Prakash Jha is something that can give anybody a nervous sort of energy in their body. But he enjoyed what I was doing and I enjoyed his direction, and it worked out well. Great. So a blue-eyed boy born and raised in a first world country, a New Yorker, gives up his privileged, comfortable life here, travels to Mumbai, looked up with skepticism and is labeled an outsider. Talk about the hardships, the roadblocks in your journey as an actor. Now that you have given the Hindi film industry 15 years, what has changed? My whole concept of life has changed. For most, 15 years in Mumbai is a big deal. And I've done 15 films in these 15 years. A lot of people don't know about that because many of them haven't released in mainstream sort of American movie theaters. A lot of the A-list Bollywood films that become famous in America, which is what I've grown up watching. I mean, I grew up in the 80s and 90s in New York and LA, and that is how I became starstruck, how I became fascinated with Bollywood, all the film star concerts and the shows. And these are the reasons why I would want to be an actor myself at that time. And when I reached Mumbai in 2007, the multiplexes were just coming up. And the whole concept of six-pack abs and really sort of heads-on with, front page, page 3 PR, and paid PR, and a lot of these exercises were coming up in Bombay. And I was an absolute newbie to the city. I didn't know any part of Mumbai. I had no contacts. I would just pick up all the trade newspapers and magazines, figure out who's making what, how to get email addresses. Acha, Mumbai is not a city that works on email at all. It works on SMS
And at that time, WhatsApp had not even come into the scene. WhatsApp came in 2-3 years after I was living in Mumbai. So it was very hard. I was a complete outsider. And I had already done my bit in New York. I had done some modeling, some theater. And by the time I moved to Mumbai, I was already a married man. I had my firstborn. So for me to struggle like a teenager or a college boy or a fresher from some small town in India, it wasn't possible. I had to make a means. I had to make a living. I had to survive. And it was very hard. It was very difficult emotionally, financially, mentally, more than anything mentally. Because rejection in Mumbai is very to the face and very hardcore. It's not a respectable rejection. It's a very it breaks your heart. तुम किसी लायक नहीं हो. Rejection और तुम्हारा होगा नहीं. Rejection, you don't fit the bill. ये एक वहाँ पे लाइन है जो शुरू में मैंने सुनी तो मुझे समझ में नहीं आया what this means. You don't fit the bill. और बहुत ही कट थ्रोट, मतलब आप भीड़ में खड़े हो और आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे and they'll just tell you you can go home, you can go home, you can go home, you can go home. And I'm thinking ऐसे कैसे चलेगा, मतलब ये तो मतलब अंदर भी नहीं बुलाते. You never lost it like with them, like. No, you lose it here. You can't lose it with them. Because if you lose it with them, then you're done. You have to control yourself here. I've lost it a lot here and here, and I've paid the price of that, clinically, medically, in every way possible. But you can't tell them कि नहीं आप बदतमीज हो, आपको बात करने का तरीका नहीं है, क्योंकि शहर बड़ा भी है और बहुत छोटा भी है. अच्छाई भी जल्दी फैलेगी और बुराई भी जल्दी फैलेगी. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपकी सुन लेंगे और आपको बोल देंगे कि बदतमीज तुम हो, तुम किसी लायक नहीं हो, वापस आना मत और हम तुमको फ़ोन नहीं करेंगे. किसका नुकसान हुआ? तुम्हारा नुकसान हुआ. और तुमको ये बोलने वाले भी वो लोग हैं जो 18-19 साल के हैं. These are college freshers who are assistants to the big casting directors. The big casting directors in Mumbai have now reached a point where they don't think of themselves as less than यश चोपड़ा और करण जौहर, कि तुम्हारी तकदीर तो हम बना रहे हैं. And no offense to them, but this is where they are, most of them, in their heads. They are offensive. I would say that is very offensive. And they don't even have to be offensive. They've hired people to be offensive. But gradually I reached a point where one film after the other, after the other came, and people realized, yeah, he's a talented actor, he's a good actor. And then they start talking to you respectfully. वो सब समय समय की बात है. आपका काम लोगों को अच्छा लगने लगा, आप अच्छे लगने लगे, आपके बारे में अखबारों में पढ़ना चालू किया, तो प्रशांत से प्रशांत सर हो गया. और फिर उम्र भी बढ़ती गई, तो दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये 24-25 साल का नहीं रहा, अब 30-35 का हो गया है, 35-36 का हो गया है, फिर अभी थोड़ा और बड़ा हो गया उससे. तो दे स्टार्ट addressing you as sir. And then once you do enough work in Bombay, then you can expect कि आपने जैसे वो KBC में पड़ाव होता है ना कि आपने 6 लाख क्रॉस कर दिया है, अब आप उससे नीचे नहीं कर सकते. अब आपने 20 लाख क्रॉस कर दिया है, उससे कम नहीं कर सकते. तो आपको ये पड़ाव क्रॉस करने पड़ते हैं इंडस्ट्री में, कि जिसके नीचे आप गिर तो सकते हो, लेकिन आपको वो मेंटेन करना पड़ता है. एंड देन दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू लिटिल बेटर. पर टाइम की बात है. 2 फ्लॉप दे दो, 2 साल नजर नहीं आओ, फिर आपको भूल जाएंगे. You still have to audition. ऑडिशन का ऐसा है कि मुंबई का पूरा कल्चर बदल गया है. एक ज़माना था कि जब आप 2-3 फिल्में कर लेते हैं और थोड़ा बहुत आपका नाम हो जाता है, तो डायरेक्टली आपको प्रोड्यूसर या डायरेक्टर फ़ोन करेगा कि वी वांट यू फॉर दिस फिल्म. आजकल बॉम्बे में काफ़ी हद तक हॉलीवुड की तरह हो गया है. नॉट कम्प्लीटली, लेकिन अच्छे एक्टरों को ऑडिशन देना पड़ता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द A-list स्टार्स और द चिल्ड्रन ऑफ द A-list स्टार्स. वो सिस्टम तो वहाँ पे है, उन लोगों को ऑडिशन नहीं देने पड़ते. लेकिन हॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स को आज भी स्क्रीन टेस्ट देने पड़ते हैं. बड़े बड़े स्टार्स को, आई मीन नेम्स दैट वुड सरप्राइज यू, दे हैव टू गिव ऑडिशंस. तो आई स्टिल हैव टू ऑडिशन, बट द प्रोसेस ऑफ द ऑडिशन हैज चेंज्ड. अ लॉट ऑफ टाइम्स आई डोंट हैव टू ऑडिशन. आई हैव बीन कॉल्ड इन डायरेक्टली बाय द डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, and they'll describe a character to me and they'll ask me if I want to do it, if it's something interesting to me. And a lot of times the casting director will call me and one-to-one explain the character to me and see if it's something I want to do. तो वो जो भीड़ में खड़े होने का चक्कर है वो खत्म हो चुका है. पर आपने वो भीड़ में खड़े होने के रोल्स किए हैं, because you said you were married very young, your family was there, your wife, your kids, and you had to make very responsible choices and conscious choices
कि आप कैसे रोल कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू bring home the money also. Initially, I have to tell you, the driving point was the work, because the money was so low कि उससे कुछ होता भी नहीं. वो मनी इतना लो था कि उससे कुछ नहीं होता. उससे ये था कि आपके 5 दिन का गुजारा भी अगर हो जाता तो हो जाता. लेकिन it was a question of चलो ये काम तो कर लो ताकि आप इस काम का इतना प्रचार कर सको, तो इस काम से ये काम मिल जाए, इस काम से ये काम मिल जाए. वो कड़ियाँ जोड़नी थी मुझे. फॉर्चुनेटली आई कम फ्रॉम अ फैमिली कि जहाँ पे रहने के वांदे नहीं थे और खाने के वांदे नहीं थे. लेकिन अल्टीमेटली you only have so much brain capacity and heart capacity to tolerate कि ये कब तक चलेगा. Very true. लेकिन भीड़ में खड़े होने के ऑडिशंस कुछ टाइम बाद ख़त्म हो गए. और भीड़ में खड़े होने के सीन तो बहुत पहले ख़त्म हो गए थे. वो मैंने अमेरिका में भी किए और मैंने इंडिया में तो नहीं किए. भीड़ में खड़े होने के सीन्स, उसको इंडिया में जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा बोलते हैं. आई हैव बीन एन एक्स्ट्रा इन सम 1 or 2 Hollywood films. One was a film with Nicole Kidman and Sean Penn called The Interpreter. That was like 16-17 years back. I was in college just starting out. तो मुझे लगा कि चलो हो सकता है निकोल किडमैन दिख जाए, शॉन पेन दिख जाए, डायरेक्टर दिख जाए. दिन के $100 मिल रहे थे तो चलो मैंने कहा भीड़ में खड़े होते हैं. लेकिन ऑनेस्टली वो 12 घंटे का काम था और मैं 3 घंटे में सेट से निकल गया. जब मैं निकला सेट से तो शाम को मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन आया कि यू लेफ्ट द सेट, यू वोंट बी गेटिंग पेड and we will never call you again. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये काम तो मुझे वैसे भी नहीं करना. तो of course. जो काम करना ही नहीं है तो आप कॉल भी मत करना उसके लिए. क्योंकि मुझे तो पता है कि in my head what was I thinking when I was going to Bombay. Any actor who comes to Bombay from New York or from Nagpur or Patna, Pune, Bihar, he is dreaming of becoming the next Amitabh Bachchan or Shah Rukh Khan. Nobody is thinking कि I'll become the next Paresh Rawal or Anupam Kher. They might by default. But everybody is dreaming of being a Salman or a Shah Rukh or an Amitabh Bachchan. That's what I dreamt of. But you'll go on to become an Irfan or a Manoj Bajpayee or like today's examples of Pankaj Tripathi, Nawazuddin Siddiqui. So वो ultimately क्या होता है वो आपकी तकदीर है. पर आप बनने तो जाते हैं वही जो नंबर 1 है. पर भीड़ में तो ये लोग भी खड़े हुए हैं. भीड़ में तो ये लोग भी खड़े हुए हैं. So how did your love affair with Bollywood begin? You were very young when you shifted your base to India. Was it the same India you had heard stories about, imagined it, seen on screen, or was it mysterious and disorienting? How many times did it break your heart? It was scary every single day. मुंबई एक ऐसा शहर है जो क्या है कि I originally belong to Jaipur. So my experience of India was समर हॉलीडेज न्यूयॉर्क से जयपुर, जयपुर से न्यूयॉर्क. और अच्छी फैमिली से बिलोंग करना मतलब एक राजाशाही लाइफ थी जयपुर में. तो इंडिया का जो एक परसेप्शन था वो ये था कि यहाँ पे कंफर्ट है, आराम है, लाइफ अच्छी है. मुंबई में मैं किसी को जानता नहीं था. फॉर्चुनेटली माई वाइफ वॉज फ्रॉम मुंबई, सो माई इनिशियल कंफर्ट वॉज दैट आई गॉट टू लिव विद हर पेरेंट्स. लेकिन और किसी को नहीं जानता था मैं शहर में. तो देयर वाज कंप्लीट डिस्कम्फर्ट. इट वाज हार्ट ब्रेकिंग एवरी डे. क्योंकि न्यूयॉर्क या LA या UK वाले जो बॉम्बे के बारे में जानते हैं, दे नो कि हाँ कहीं बैंड्रा में एक मन्नत करके घर है जो शाहरुख खान का है, एक जुहू में एक घर है अमिताभ बच्चन का, और एक फिल्म सिटी है गोरेगांव में. तो यार मुंबई की लाइफ तो इज सो रेड कारपेट, स्पॉटलाइट, बॉलीवुड स्टार्स. और यहाँ पे जितने भी शोज़ आप देखते हैं अमेरिकन इंडियन टेलीविज़न पे, या उनके अमेरिकन जो कॉन्सर्ट्स होते हैं यहाँ पे न्यू जर्सी में होते हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं, कैलिफोर्निया में होते हैं, तो द परसेप्शन ऑफ बॉलीवुड इज़ वेरी स्टारडम, ग्लिट्सी एंड वेरी यूफोरिक. पर वो जो शहर है वहाँ पे हज़ारों लाखों ऑटो रिक्शा की कैकों से आप परेशान हो सकते हैं, और BST की बस आपको परेशान कर सकती है, वहाँ के सड़कों के खड्डे आपको परेशान कर सकते हैं, वहाँ की बारिश जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही रिस्की भी है. और वहाँ के जो स्टूडियोज़ है जहाँ पे आप ऑडिशन करने जाते हैं वो किसी 5-10 माले की बिल्डिंग में नहीं है. वो काफ़ी स्टूडियोज तो झोपड़पट्टियों में है. really? लोगों को नहीं मालूम वहाँ पे किस किस तरह के ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे सड़कें भी नहीं बनी हुई है. वो अनसीमेंटेड, अनकॉन्क्रीट वाला लैंड है जहाँ पे छोटे छोटे चॉल टाइप स्टूडियोज़ हैं,
उनके अंदर एक स्पॉटलाइट, एक ग्रीन स्क्रीन है और आपको स्क्रिप्ट दे दी जाएगी कि आपको ये पढ़ के आपको ये सीन करना है। एंड दिस इज व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट। अब तो ये है कि हाँ प्रशांत सर ये फिल्म है, ये रोल है, 5 दिन पहले स्क्रिप्ट मिल जाएगी, उसकी तैयारी का मौका मिलेगा। लेकिन it's a ruthless way of testing an actor. A lot of times there'll be 10 other actors in the room while you're performing. तो ये सब कल्चर थोड़ा पहले से सुधर गया है, लेकिन it wasn't easy. It was very cutthroat. So when did you feel that you had arrived? Talk about when you felt, what you felt when you signed your first autograph. I signed my first autograph a long time ago, लेकिन वो भी क्या था, किसी ने दिल खुश रखने के लिए मेरा ऑटोग्राफ ले लिया। अरे अब तो ऑटोग्राफ्स लेते नहीं है लोग, सेल्फीज लेते हैं। तो अच्छा लगता है जब लोग सेल्फीज लेते हैं, और अब सेल्फीज का फैशन हो गया है। तो आई थिंक ये अराइवल वाली जो फीलिंग है ये अभी तक आई नहीं है। अब मेरे साथ क्या है कि सक्सेस हैज बीन वेरी कदम कदम, स्टेप टू स्टेप। एक फिल्म से दूसरी फिल्म, दूसरी से तीसरी, कई बार इन फिल्मों के बीच में गैप बहुत लंबे रहे हैं। कोई ऐसी फिल्म नहीं कि जिसके बाद जिसे कहते हैं हम पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। वैसा तो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन उसके मैं बहुत नज़दीक हूँ। शायद आश्रम के बाद में पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। काफ़ी मेरी चीज़ें अब रिलीज़ होने वाली हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब लोग आपका नाम जानते हैं आपके बोले बिना, और आपके साथ तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, आपको इंस्टाग्राम पे डाल के आपको टैग करते हैं। ये सब चीज़ें पहले से बेहतर हो गई हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन एनी कॉम्प्लीमेंट, एनी और ये बहुत गलतफहमी है, बहुत से लोगों से मैं आजकल मिलता हूँ, खास न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, जो मुझे जानते हैं चेहरे से या मेरे नाम से, और वो 15-20 मिनट बाद मेरे पास में आते हैं कि हम सोच रहे थे आपके पास में आए कि नहीं, कहीं आपको बुरा लग जाए या आप डिस्टर्ब हो जाओ। एंड आई वुड टेल माई वाइफ कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि प्लीज मुझे डिस्टर्ब करो, प्लीज मुझे डिस्टर्ब करो। और मुझे ही नहीं, वो जो कार्तिक आर्यन है या वरुण धवन है या सिद्धार्थ मल्होत्रा है या रणबीर कपूर है, वो उतना ही डिस्टर्ब होना चाह रहे हैं कि जितना मैं। अगर एक्टर को जिस दिन आप लोगों ने डिस्टर्ब करना बंद कर दिया ना, वो कहीं का नहीं रहेगा। So true. So give us a peek into the things that go on in Bollywood, which the insiders only have access to or know of. Right now, imagine that you're playing the part of paparazzi for us. So give us the inside scoop. सच बताऊं आपको, वेरी वेरी ऑनेस्टली, जो लोग बॉलीवुड के अंदर है ना, उनको बॉलीवुड की बहुत कम खबर है। हाँ, ये जो पापराज़ी कल्चर है, या किसका चक्कर किसके साथ में चल रहा है, कौन किसको डेट कर रहा है, क्या हो रहा है असल में, किस डायरेक्टर किस एक्टर के बीच में अनबन है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर या तो मैगजीन्स में छपती हैं या न्यूज़पेपर्स में छपती हैं। और सच बताऊं, 90% एक्टर्स इन मैगजीन्स को और इन पेपरों को पढ़ते ही नहीं है। उसका कारण यह है कि 90% तो पेड पब्लिसिटी है। तो 90% एक्टर को ये मालूम है कि परसों मेरी खबर छपने वाली है, क्योंकि उसके पैसे मैंने दिए थे। ठीक है, या मेरे पब्लिसिस्ट को मैंने हायर कर रखा है, तो मंडे का स्लॉट नहीं मिला, ट्यूसडे का स्लॉट मिला है। तो ट्यूसडे को फ्रंट पेज की इतनी कीमत है, बैक पेज की इतनी कीमत है, मिडिल की इतनी कीमत है, टेलीविजन इंटरव्यू की इतनी कीमत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ पेड है, ऑर्गेनिक पब्लिसिटी मिलती है। आई टचवुड हैव हैड द गुड फॉर्चून of getting more organic publicity rather than paid, but that's because I have built a relationship with journalists directly. I chose the smarter route कि जब काम सही निकलेगा ना पर्दे पे, तो फलाना राइटर को मैं फोन करूंगा, ईमेल करूंगा, and I've done that. I've called up journalists and but I'll vouch for this that you never paid me or called me. I'm the one sorry who called about that. you I and do approached apologize. you. I apologize for that. But the lunch is on you, Prashantt. The lunch is on me. Lunch is on me. यहाँ कम किया है। यहाँ पे ऑर्गेनिकली बहुत खबरें छपी हैं मेरे बारे में, पर इंडिया में तो क्योंकि मेरा मेन बेस वहीं बना हुआ था, so I'm not going to deny that I haven't ever paid. Everybody's paid, from me to the top star of the. They have the media on a payroll. तो क्योंकि they have so much work. It's not like ये फिल्म आ रही है तो I have to pull out some money. उनके तो 12 महीने का एक अकाउंट चल रहा है पब्लिसिस्ट के साथ, कि इतने एयरपोर्ट अपीयरेंसेस आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि एयरपोर्ट्स पे बहुत सारी फोटोएं खींची जा रही है। तो अब आप लोग लॉजिकली सोचिए कि कौन सा एक्टर कब ट्रैवल कर रहा है
किसी रिपोर्टर को थोड़ी मालूम है कि आज फलाना की 345 की फ़्लाइट है इंडिगो से या स्पाइस जेट से या जो भी एयरलाइन है। वो एक्टर टू पब्लिसिस्ट का रिलेशनशिप है। मैं भांडे फोड़ रहा हूँ इंडस्ट्री के, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत मजा लेकिन पब्लिसिस्ट फिर मीडिया को फ़ोन करती है कि इतने बजे एयरपोर्ट पहुँच जाना। अब कुछ एक्टर हैं जिनको ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतने बड़े हो चुके हैं, और कुछ एक्टर इतने बड़े हैं कि मीडिया वैसे ही पता कर लेती है कि वो शहर में कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, कि जैसे शाहरुख खान हुए, सलमान खान हुए। पर बहुत सारे ऐसे भी एक्टर हैं कि जिनकी मीडिया को खबर ही नहीं है कि वो कब आ रहे जा रहे हैं। मैं आए दिन किसी रेस्टोरेंट में या कैफ़े में जाता हूँ तो जो एक्टर यहाँ पे नेसा कॉलोसियम में या आपके कौन सी न्यू जर्सी में एरिनाज है जहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो मेरे बगल में बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं फला, और कोई उनको पूछ भी नहीं रहा होता है। इट कुड बी एनीबॉडी। आई हैव हैड रणबीर कपूर सिट हियर, आई हैव हैड सोनाली बेंद्रे सिट हियर, आई हैव हैड वरुण धवन और अर्जुन कपूर सिट हियर, और बड़ी आम और बड़ी खास बात है बॉम्बे में। कोई नहीं जाता कि प्लीज़ कैन आई हैव अ फोटो, कैन आई हैव ऑटोग्राफ, तो कोई लेता ही नहीं आजकल। आज किसी की जेब में कागज़ और पेन होता ही नहीं है, सबके पास मोबाइल है। But the truth is, it's a business at the end of the day. It is. And I've paid the hard price of this business, and it's okay. What 15 years has taught me is that being the biggest star in the industry is not as important as being a happy man. I know for a fact how many big stars are unhappy people in reality, who can't sleep at night, or who don't have a good family life, or who have trouble with many other things in their life. And then there are actors who've made it as actors, who are seen across Netflix and Amazon and abroad in the US. And they have a good family life also. They get up in the morning, they do their yoga, they travel to a Maldives with family, they have a good marriage life, and their children are not growing up spoiled. So it's much important to be happier and healthier. Yes, a certain level of fame and wealth is important, but at the cost of your mental health and sanity. After 15 years, I can say that I'm okay not being a top star. I'm just okay being a very successful actor, and I'm not there yet. It's just a matter of time. And it's just a matter of time. So talk about the process of auditioning and networking, and how did you bag the roles in Nirja or Special Ops? Describe your memorable experiences with your co-stars and directors. Nirja happened because I had read in an article in a very famous newspaper in India called the Mumbai Mirror. I read an article that a filmmaker by the name of Ram Madhvani is making a film on a Pan Am airline tragedy. That's all I read. It struck me because in the 80s, I only flew Pan Am. From New York to Delhi, Delhi to Jaipur was by car, and Pan Am was my family's favorite airline. And I didn't know there was a Pan Am tragedy. So I got the number of Ram Madhvani from a friend. I messaged him, कि you're making this film, I'm an actor, I grew up in New York, I only used to fly Pan Am, and I would love to audition for this film. He said, audition are 4 months away, contact me then. I contacted him, he put me onto the casting director, they called me in, and the reason I got Nirja is because of my American accent. Because they needed an Indian who has an American accent. And the scene in Nirja in which the terrorist is attacking me and hurting me, they did that in the audition room. So I played that effectively, and I had an American accent. That's how I got cast for Nirja. And the best part about Nirja was that it taught me a very valuable lesson, that even playing a small role in a very big film will get you more mileage in life than playing a big role in a small film, which nobody sees. True. So working with the Sonam Kapoor was interesting because she became an acquaintance for some time. She helped even promote me on social media, and we would laugh, we would joke around, and it was good because I actually had to fall off the plane, and I hurt myself during rehearsals, so I had to avoid I had to avoid rehearsing for a few days. But I remember when I hurt myself and I had to go to the hospital, Ram Madhvani had called me, and he checked in on me to see how I'm feeling, because I had to constantly practice falling off a plane onto boxes and mattresses, free fall. I couldn't fall like I'm planning the fall, because you don't get shot in the head and say, oh. You get shot and you fall, and you have to collapse. So
it happened so many times that I injured my neck. And then he said, Prashantt, one day you'll be a big star because every star has injured themselves shooting. Oh. So he was very sweet about it. And Nirja got me a lot of international fame because the film had released worldwide. And people said, Arey yaar tumhe Nirja mein dekha, Arey yaar tumhe Nirja mein dekha. But for the next 2 years, I was known as the actor from Nirja. Acha, ye wohi Prashantt wo Nirja wala. So I was still looking, it was nice for a year. But then I became tired of being Nirja fame Prashantt Gupta. I just wanted to be Prashantt Gupta that everybody knows. Fir, I got a film that helped move that forward, which I'm sure you'll get to asking me about. But gradually, the interest that every actor has is they become just an actor whose name is known. And then they become a face that everybody knows. I don't mind saying, hi, I'm Prashantt Gupta, because that's courtesy. But I'd like to be in a position where everybody knows I'm Prashantt Gupta. I remember a long time ago when I was living in New York, I was interning with a producer and I was told that I can be the MC for an event and the chief guest is Anil Kapoor. I was hardly 21 at the time, so I had to go pick him up at the airport. So मैं बहुत खुश होके अपनी girlfriend at the time, who later became my wife, Mansi. तो मैंने उसको कहा कि सुनो, I have to go to the airport tomorrow to pick up Anil Kapoor. You know, I'm really moving up the ladder here. She's like, आप ड्राइवर का काम कर रहे हो, आप किसी एक्टर को एयरपोर्ट पे पिकअप करने जा रहे हो. This is not moving up the ladder. And I realized she's right. मैं एयरपोर्ट पे लेने जा रहा हूँ किसी एक्टर को, इससे क्या होगा मेरे एक्टिंग करियर का. But ठीक है, I was 21 तो चलता था. But when I went up to Anil Kapoor, I said, sir, hi, I'm Prashantt Gupta. He said, hi, I'm Anil Kapoor. And I was like, first time it struck me in my head is, why does this man need to introduce himself? But it's basic human manners. Exactly. So it taught me a valuable lesson. Mr. Bachchan till date does the same thing. Anybody walks up to him and says, hi, I'm Rahul, Neeraj, Prashantt, whatever. Hi, I'm Amitabh. These are manners. So I just want to ask कि you were considered like a driver by your girlfriend. तो आप वो बीच में छोड़ के चले तो नहीं गए? And then somebody called you कि हम आपको आगे से नहीं बुलाएंगे. नहीं. ये काम मैंने पूरा किया. Because at least what happened is I got to sit in the car with him and talk to him. He was much more of a contact for me, or supposedly, than the casting director in New York who was casting me in the background. So, जो बच्चे अमेरिका में बड़े हुए, उनके लिए ये भी बड़ी बात थी कि वो एक ही गाड़ी में अनिल कपूर के साथ में बैठे. हम ये नहीं भूल सकते कि हम नेसो कॉलोसियम में जाके पैसे दे के इनके शोज देखा करते थे, वो भी दूर से $50 वाले, और दूर से दूरबीन से हम देखते थे कि अनिल कपूर दिख रहे हैं. एंड यू नो, अब हम साथ में गाड़ी में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि हम हमारे सपने के तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, ड्राइवर ही सही. और ये किसने नहीं किया है? ये काम अनिल कपूर ने भी किया है. अनिल कपूर वॉज एन असिस्टेंट टू हिज फादर. Surendra Kapoor, I think his name was. And Anil Kapoor's job was to pick up the actors of those films in those days. Anil Kapoor has said, in the 1960s, I would be picking up Kanhaiya Lal ji or this actor or that actor from the airport, dropping them to the studio. तो ये काम तो ये एक्टर भी कर चुके हैं. तो आज अगर मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? वो तो फिर भी प्रोड्यूसर के बेटे. मेरा तो इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं. So these are all signs. हाँ. आपको चोट लगना, आपको ड्राइवर का काम करना, प्रोड्यूसर पे. यहाँ पे in New York I have interned in producers' offices, and part of the interning job was कि lunch time हो गया, जाके कॉफी ले आओ, लंच ले आओ. सब कुछ किया है. करने की जरूरत नहीं थी from the family I belong to. लेकिन अगर नहीं करता तो क्या करता? So talk about your process of preparing for a role, getting into the skin of the character. The length of your role in the character you played in Vivek Agnihotri's Tashkent Files is rather impressive. You stood out for me in your role as a politician bureaucrat when you delivered a long dialogue in the room where practically everyone else is sitting and watching you switch from your calm to angry demeanor. How many shots did you take to deliver that? वो एक ही शॉट में हुआ. Oh my God! हाँ, but I must thank Pankaj Tripathi. Everybody in the world today knows Pankaj Tripathi. He's one of India's finest actors. See, Vivek Agnihotri is a great storyteller, but I got very scared of him because he
is a very I wouldn't say he's angry in any way, but he is a very intense director. He's not a calm, composed director कि चलो एक और लेते हैं, चलो फिर से लेते हैं. मतलब प्यार से नहीं करते. प्यार से मतलब in the sense कि अब वहाँ पे भी क्या होता है, the funny thing is कि seniority और juniority का फर्क पड़ता है. I was the junior most in that room. Yes. ठीक है. So I remember at times, और वो हम 11 लोग एक ही कॉन्फ्रेंस रूम में, 80% ऑफ द फिल्म इज हम 11 लोग उस एक कॉन्फ्रेंस रूम में. अब विवेक अग्निहोत्री दूसरे कमरे में बैठे हैं जहाँ पे मॉनिटर है और साउंड की पूरी टीम है, और हम लोग जहाँ पे हमारा लोकेशन है, हमारा जो सेट है, तो वहीं से माइक पे इंस्ट्रक्शंस मिला करते थे. तो 11-14 एक्टरों को सेट करना, अपनी अपनी फील्ड देना ताकि कोई किसी को ब्लॉक नहीं कर रहा हो. इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, एंड ही इज वेरी गुड एट प्लेसिंग पीपल एंड दिस एंड दैट, सो इट लुक्स वेरी ऑर्गेनिक. But see, there were times when there's a different way of talking to a Prashantt and talking to a Mithunda and talking to a Pankaj Tripathi. वो थोड़ा बहुत फील होता था, क्योंकि अगर मान लो दादा, गलती हर एक्टर से होती है, मिठुंदा से भी होती थी, उनको भी रीटेक लेने पड़ते थे, पंकज भाई को भी लेने पड़ते थे. तो पर वहाँ माइक से दादा ज़रा आप वो फिर से कर देना एक बार, दादा थोड़ा सा लेफ्ट हो जाना. और अगर पंकज त्रिपाठी है तो पंकज भाई ज़रा एक बार और करेंगे, कोई बात नहीं, फिर से आप थोड़ा सा 2 कदम पीछे आ जाइए. और अगर प्रशांत से कोई गलती होती, यार प्रशांत तुम क्या कर रहे हो यार, 2 कदम पीछे आओ ना, गुड, बस स्टैंड देयर. हाँ, कई बार ऐसा होता था. इट्स नॉट लाइक ही वॉज ट्राइंग टू इंसल्ट मी और ऑफेंड मी, बट इट वॉज लाइक चलो छोटा हूं. मतलब नेपोटिज्म तो है, ये डिस्क्रिमिनेशन तो है. डिस्क्रिमिनेशन एक गलत वाला नहीं, बिकॉज आई एम सो ग्रेटफुल टू विवेक अग्निहोत्री. ही डिडंट ऑडिशन मी फॉर दिस रोल. Oh, he didn't. The producer of the film introduced me to Vivek Agnihotri. I went into his office and we met in San Francisco for another event, and he told me कि तुम मेरी पिक्चर में हो. Wow. And he said कि मैं तुमको बहुत बढ़िया रोल दूंगा. He gave me a role that changed my life. I'm talking about the fact that ये एज बैरियर, सीनियोरिटी बैरियर, ये सब तो चलता रहेगा लाइफ में, ये और ये बहुत नेचुरल भी है. उनको शायद पता भी नहीं होगा कि मुझे ऐसा फील हुआ होगा, लेकिन मुझे उस वक्त ऐसा फील हुआ था कि यार अगर मैं थोड़ा और आगे होता लाइफ में तो शायद मेरे पे चिल्लाया नहीं जाता, क्योंकि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूँ, लेकिन अब गलती किसी से भी हो सकती है. 11 लोग खड़े. एक सीन था कि पंकज भाई के भी 3-4 टेक थे, एंड ही फेल्ट वेरी मच लाइक आज मेरे से क्या हो रहा है, आज मेरे से क्या हो रहा है. हर एक्टर से होता है, बड़े से बड़े एक्टर से होता है. But how did Pankaj Tripathi help you? हेल्प मी. तो वो जो मेरा लंबा डायलॉग था कि ये देश शास्त्री जी का है, ये नहीं आए सर कि ये देश गांधी का है, नेहरू का है. शास्त्री जी के तो मैं खिलाफ था फिल्म में. तो उस सीन के एक दिन पहले आई आस्क्ड पंकज भाई कि आप ये सीन करते तो कैसे करते. आई डिडंट वांट टू फील द कॉन्फिडेंस कि मैं कल कर लूंगा, जैसे भी करूंगा. सी ही हैड रीच्ड अ लेवल वेयर ही वाज ऑलरेडी एक मंझा हुआ एक्टर एंड वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ, एंड वी स्ट्रक अ रियली गुड कॉर्ड. टिल डेट वी वर गुड फ्रेंड्स. तो आई वॉकड अप टू हिम आफ्टर पैकअप. आई सेड पंकज भाई कल ये सीन है मेरा, आप बताओ आप कैसे करते हैं. ही जस्ट टुक द स्क्रिप्ट एंड ही सेड लाओ मैं बताओ कैसे करते हैं. तो सच बताऊं, जैसा पंकज भाई ने किया मैंने अगले दिन वैसे ही किया. अरे वाह. और ये सच बात है. तो इसका श्रेय मुझे मिला लोगों से, लेकिन इसका श्रेय मैं उनको दूंगा, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा करने को मैंने वैसे ही किया. तो उन्होंने क्या आपको नुस्खे बताए कि ऐसा करना, इस पे स्ट्रेस करना? छाती खोल और दिल से, ये नहीं कि धीमे आवाज में कि ये देश गांधी जी का है. क्या हर एक सीन को करने के 10 तरीके होते हैं. आप अमिताभ बच्चन की तरह कर सकते हैं, आप उसको इरफान खान की तरह कर सकते हैं, लेकिन ही सेड कि ये तुम्हारा मोमेंट है, ये तुम्हारा मोमेंट है. 11 जने चुप हैं, तुमको भाषण देने का मौका मिल रहा है. ही गेव मी द एग्जाम्पल ऑफ मोदी जी, ही गेव मी द एग्जाम्पल ऑफ अटल जी. बोले सुनना है तो इन लोगों को सुनो, क्या धाकड़ ऐसे बोलते हैं, एकदम आपसे भारतवासियों मतलब
Even Manoj Bajpayee told me that one of his great inspirations was Atal Bihari Vajpayee. These were great orators. Yes. So he said, this is your moment. And just go out there and make it yours. फिर उसके बाद में वो लड़की मुझे उकसाती है और वो जो गुस्सा आता है फिर वो अपने अंदर का अमिताभ बच्चन जाग उठा कि कैसे टेबल को बैंग करना है और उसकी तरफ जाना है. तो it's a combination of things. But he said, Prashantt, it's your moment. Make it your moment. It was well done, of course. And then I was surprised that the same director didn't cast you in Kashmir Files. Any regrets? No regrets, because when I saw Kashmir Files, I asked myself कि इसमें मेरे लिए होता भी तो कौन सा रोल होता. अब उस पिक्चर में सारे रोल्स सीनियर एक्टरों के थे सिवाय दर्शन कुमार. दर्शन के. और दर्शन मेरा अच्छा दोस्त है. वी हैव जस्ट वर्क टुगेदर इन आश्रम. बट वो एक जो कश्मीरी पंडित का जो लुक होता है ना फेशियली, वो दर्शन के फेस को बहुत सूट किया. दर्शन के काम को देखने के बाद एक तो मैंने बहुत प्राउड फील किया कि क्या बढ़िया काम किया है. ऊपर से मुझे ये लगा कि जो दर्शन का जो लुक है, जो थोड़ा सा एक नॉर्थ ईस्ट का लुक है, तो ही इज फेयर देन आई एम. ही हैज दैट नॉर्थ ईस्ट लुक. ही काइंड ऑफ आई वुड से ही लुक्स मोर कश्मीरी देन आई डू. और जो कश्मीरी पंडित वाला, तो कोई रिग्रेट नहीं. आई हैव रीच्ड अ पॉइंट इन माई लाइफ कि मुझे वही मिलना है जो मेरे हाथों में है और जो मेरी तकदीर में है. तो कोई रिग्रेट नहीं. और गर्व इस बात का हुआ कि वो रोल दर्शन ने किया. वो रोल नेपोटिज्म को नहीं किया. दर्शन भी बाहर वाला ही है. उसने भी बहुत स्ट्रगल किए हैं. वो भी एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया है. और अब दर्शन से बात करता हूँ तो वो बोलता है कि यार कश्मीर फाइल्स हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर मी. आई एम वेरी हैप्पी. आज उसका गेम चेंज हुआ है, कल मेरा होगा. तो कोई रिग्रेट्स नहीं. Amen. So you of all the people are aware of South Asian actors, filmmakers based in this part of the world, and yet this is not an industry that is recognized. And not everyone can just pack their bags and leave off for what seems like greener pastures. So what is your advice to them if they want to take the route that you took? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो साउथ एशियन जो टर्म है, इसको हिंदुस्तान में कोई यूज़ ही नहीं करता है. ये एक अमेरिकन टर्म है हम इंडियंस के लिए. करेक्ट. जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल है, बांग्लादेशी भी शामिल है. मेरे 15 साल जो मैंने मुंबई में निकाले हैं, मैंने कभी साउथ एशियन शब्द सुना नहीं. तो वो लोग कैसे एड्रेस करते हैं यहाँ की फिल्में जो बनती हैं? एनआरआई बोलते हैं. एनआरआई, यहाँ के लोगों को एनआरआई बोलते हैं. एनआरआई बोलते हैं बेसिकली. साउथ एशियन तो यूज़ ही नहीं किया. उनको पता ही नहीं साउथ एशियन क्या है. क्योंकि it's actually a very confusing term if you ask me. South Asians could actually be what a part of America calls Oriental people, the Chinese or Filipinos or Thai people, and South Asian for Indians could be Tamilians or Hyderabadis or Telugus who are known as South Indians. तो ये South Asian तो बहुत ही confusing term है. इंडिया में तो इस्तेमाल नहीं करते. लेकिन यहाँ पे जब शुरुआत हुई थी so called South Asian सिनेमा की, ABCD जैसी फिल्में और ABCD जैसे कॉन्सेप्ट्स, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम वहाँ पे अटक के रह गए. हमारा क्वालिटी ऑफ सिनेमा हाई नहीं था, हमारे बजट्स हाई नहीं थे. अब आई थिंक अगर हम थोड़ा बहुत समझें कि नेटफ्लिक्स पे और अमेजोन पे और यहाँ के चैनल्स पे साउथ एशियंस जो हैं, न्यूयॉर्क वाले, LA वाले, वो कितने पॉपुलर हो गए हैं. चलो प्रियंका चोपड़ा तो हैज़ बिकम ए ह्यूज स्टार फॉर us Indians in Hollywood. Irfan Khan, Adil Hussain, Riz Ahmed, and Suraj Sharma, Manish Dayal, Frida Pinto, Dev Patel, so many of them have, Cal Penn, they've made such a phenomenal mark for themselves. So the time has come for all of us to not look at ourselves as brown or South Asian, but to see ourselves as a part of the mainstream. And what do we bring to the mainstream? If we keep telling our stories, we'll only find our audience. And our audience is too small for commercial and consumption purposes. We're going to have to go mainstream, because the truth is, if we've been living here for 30, 40, 50 years, we're as mainstream as anybody else. Maybe our skin color is different, but our experiences are not.
So, with your vast experience and skills that you've gained over the years, would you consider returning to New York and resurrecting the not South Asian but NRI film industry here? I have reached a point in my life where now I want to work internationally. I will spend a lot of time in Mumbai, I will spend a lot of time in LA, I will spend a lot of time in New York. I've reached a point in Mumbai where a lot of people tell me ki people know you well enough now, they'll call you when they need you. Most auditions happen by phone and they don't happen today, they happen 3 days later. So you get to prepare. जानो घर वहाँ पे भी है, घर यहाँ पे भी है. इंडिया में बड़ा काम मिलेगा, इंडिया जाएंगे. यहाँ बड़ा काम मिला, यहाँ पे काम करेंगे. So I'm not particularly interested in resurrecting or reviving a so-called NRI culture of cinema. I'm interested in being a part of mainstream American entertainment. Whether they cast me as a typical Indian, no problem. Whether they cast me as an Indian who happens to live in America, which is somewhere along the lines of the film that I made called A New Christmas. I think I represent America as much as any other American. I have stories to tell that are mainstream. Let's see if they see the same thing that I see. Hopefully they will. They will. So talk about your future projects and what should your fans be looking out for? My fans should be looking out for as many mosques, temples and churches where they can go and pray for me. कि ये निकल पड़े, ये भी चल पड़े और इसको भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े. He also arrives. क्योंकि so far तो I've only arrived at airports and offices. But ये arrival भी क्या है actually में इस इंडस्ट्री में अगर किसी भी एक्टर ने 3 बुरे साल देखे ना तो लोग अखबारों में उसका एग्जिट लिखना चालू कर देते हैं. बड़े से बड़े एक्टर का. मैं तो अभी वहाँ पहुँचा भी नहीं हूँ. तो अराइवल एग्जिट यहाँ कुछ भी नहीं है. यहाँ पे एवरी फ्राइडे, अब तो फ्राइडे भी कुछ नहीं रहा. अब तो आपकी फिल्म थर्सडे को रिलीज हो सकती है नेटफ्लिक्स पे, वेडनेसडे को रिलीज हो सकती है. तो माय वर्ड टू माय वेल विशर्स आउट देयर is that I have a lot of releases coming up by the grace of God and by your good wishes. Those who follow me on social media, who've read about me in papers, who've seen me on various television shows or films or streaming platforms, thank you for watching me. Thank you for writing to me. If you ever find me at any park or train station, don't hesitate. Stop for a selfie. Make me feel good. Follow me on social media and just pray for me. But the good thing is, a lot of stuff is coming out. Some ads are coming out, some short films are coming out, a lot of feature films are coming out. So by the grace of God, I think I'm entering the arrival station. Beautiful, beautiful. Prashantt, it was so much fun talking to you. Can't wait to see you in your forthcoming projects and of course, Ashram 4. Thank you for talking to us. Thank you, my pleasure, ITV. Thank you.